वेल स्टूडेंट, टुडे आज करेंगे चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट 2.3 10th स्टैंडर्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड प्रैक्टिस सेट 2.3 पेज नंबर 39 for the mathematics part 1 standard 10. Okay, we'll do this for completing the square method. Okay, we'll do this first problem. Very simple if you know the formula. Okay, so what is the first problem? X square plus x minus 20 is equal to 0. So first what you have to do, you have to take a b c, we will compare it करेंगे जनरल फॉर्म में. So compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to, I think it's given, take 1. B is also not given, take it as 1. C is equal to minus 20. So this is the first step. Okay. Next, we'll use formula for this. Okay. What is the formula? Okay. We'll use this formula. Easy or difficult? Okay. You can follow this. It is very easy. We'll do this. This is equal to 0. Then formula है x square plus bx plus b by 2 the whole square minus b by 2 the whole square plus c is equal to 0. So we have to use this formula for completing the square method के लिए. ये यूज़ करेंगे. तो अभी इसका वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस बी इज 1, सो वी कैन टेक इट एज 1x प्लस बी इज 1 बाय 2 द होल स्क्वायर माइनस बी इज 1 बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस c is minus 20, so take it as minus 20 is equal to 0. So this is completing the square method. Okay, तो बस यहाँ पे ऐड करना है, एक वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. Now you have to group it, take it that side, keep it here. So that will become x square plus 1x plus half the square is equal to, it will go that side, 1 by 2 the whole square plus 20. Now this is the formula, so you have to use this. That will become x plus 1 by 2 the whole square is equal to, it will become 1 upon 4 plus 20. Okay. Now we have to simplify this. Okay, that will do then. Therefore x plus 1 by 2 the whole square is equal to 1 upon 4 plus 20. This will go here. Okay, that will go 1 plus 20 into 4, 80. 80 divided by 4. So that will become 81 upon 4. Okay. Therefore, x plus 1 by 2 the whole square is equal to 81 by 4. Now take square root both sides. Taking square root both sides, what we get, x plus 1 by 2 is equal to plus or minus under root 81 upon 4. Okay. Now you know root 81 upon 4 is equal to, this is
root 81 upon root 4, that will become 9 by 2. So therefore x plus 1 by 2 is equal to plus or minus 9 by 2. Now we have to take plus value one time and minus one time. So x plus 1 by 2 is equal to plus 9 by 2, or x plus 1 by 2 is equal to minus 9 by 2. Now you have to take it that side. So x is equal to 9 by 2 minus 1 by 2. So 9 minus 1, 8 by 2. So that you can cut it 4. Therefore x is equal to 4. Okay. Then that side, what to get? So x is equal to minus 9 by 2 minus 1 by 2. Therefore x is equal to minus 10 by 2. Cut this, minus 5. So x is equal to minus 5. Okay. So this is the answer for first problem, completing the square. बहुत ईजी है अगर आपको ये फॉर्मूला आता हो. ये फॉर्मूला यूज़ करना है और फाइंड करना है. ठीक है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे अभी. ओके. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सेम मेथड फर्स्ट कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए इज इक्वल टू, अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया तो 1 लेंगे. बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू माइनस 5. देन वी विल राइट द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, then x square plus bx plus b by 2 the whole square minus b by 2 the whole square plus c is equal to 0. तो इसका फॉर्मूला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का. तो अभी इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे ए का तो कुछ यूज़ नहीं है. ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 2x प्लस बी इज इक्वल टू 2 by 2 द होल स्क्वायर माइनस बी इज टू 2 by 2 द होल स्क्वायर, सी इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0. Now we can cut this. Okay. So we can cut this. It will become 1. It will become 1. So that will become x square plus 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल ग्रुप इट. इसको ग्रुप करेंगे, इसको ग्रुप करेंगे, इसको राइट साइड में लेंगे. दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5. So that will become 1. So 1 square is 1. So 1 square is 1. So 1 plus 5 is 6. Okay. So that will become 1 plus 5. So x square plus 2x plus 1 square is equal to 6. 5 plus 1 is 6. Now इसको फॉर्मूला में फिट करेंगे. ठीक है. x plus 1 the whole square is equal to 6. So यहाँ पे प्लस क्यों है? y प्लस. ओके. y प्लस. ओके. y नॉट माइनस. माइनस क्यों नहीं आ रहा है? y नॉट माइनस. तो इट इज प्लस. ओके. सेकंड टाइम ये यहाँ पे प्लस है. इफ इट इज प्लस देन इट विल बी प्लस. ओके. एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर देन x माइनस 1 द होल स्क्वायर. अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर है तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर. सो दिस प्लस माइनस माइनस. सो सेकेंड टर्म का माइनस
यहाँ पे आएगा, सेकंड टर्म का प्लस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो दैट्स वाई प्लस, ओके, तो दैट्स वाई प्लस रहना है, हमें माइनस नहीं रहना है. Now taking square root both sides, okay, taking square root both sides, what we get, x plus 1 is equal to plus or minus under root 6, okay. तो अभी ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एक प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस रूट 6 और एक प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट 6. So 1 will go that side, so x is equal to root 6 minus 1, or here is equal to minus root 6 minus 1. Okay, we will now do third problem. So main thing, ये formula important है completing the square के लिए. अगर ये फार्मूला आ गया तो समझो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी इजीली आ जाएगा, ओके. The third problem, what they had given, m square minus 5m is equal to minus 3. So यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो राइट हैंड साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो इसको ये साइड लेते हैं हम, ठीक है. सो विल टेक इट दिस साइड फॉर द राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सो वी विल गेट लाइक दिस. नाउ कंपेयर करेंगे एज यूजुअल, comparing it with am square plus bm plus c is equal to 0. A is not given, take a is equal to 1, b is equal to minus 5, c is equal to plus 3. Okay. Now you write the formula. If क्या formula था, if m square प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओके. तो बिकॉज यहाँ एम स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि हम एम वेरिएबल है, एक्स रहेगा तो एक्स, वाई रहेगा तो वाई. देयरफॉर एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस बी बाई 2 द होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द फॉर्मूला, ओके. तो फॉर्मूला में इसके वैल्यू को फिट करते हैं, तो इट विल बी लाइक दिस, एम स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू माइनस 5 है, तो माइनस 5m प्लस बी इज माइनस 5 बाई 2 द होल स्क्वायर एंड इट इज माइनस 5 बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस सी इज 3 इज इक्वल टू 0, ओके. So now you have to take this part one side and that part right hand side. So it will become m square minus 5m plus minus 5 by 2 the whole square is equal to, it will go that side. It is minus, that will become minus 5 by 2 the whole square. So it will become plus हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस will not change, this ये माइनस माइनस ही रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस will be like this, ये it will become minus 3. Now you should know that minus 5 by 2 the whole square is equal to 5 by 2 the whole square. दोनों सेम है क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे स्क्वायर है, सो इवन नंबर है तो माइनस ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ओके, बिकॉज इट इज स्क्वायर, ओके. अगर ऑड रहेगा तो नहीं हटेगा, सो हम इसको हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हटा सकते हैं. So m square minus 5m plus 5 by 2 the whole square is equal to plus 5 by 2 the whole square minus 3. That is how much? That will become m square minus 5m
plus 5/2 the whole square is equal to 5 square is 25 upon 4 minus 3. Okay. Now that we will write it that side, m square minus 5m plus 5 upon 2 the whole square is equal to 25 upon 4 minus 3. Now this will go here, okay. So that will become 25, 4 into 3 minus 12 upon 4. So that is how much? 25. So 25 minus 12 is 3, 1, 13, okay. So that will become 13. That will become 13 upon 4. So that we will write it here, m square minus 5m plus 5/2 the whole square is equal to 13/4. Now this and this, so it will become m. ना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा इधर. If it is minus minus, plus means plus, and this is 5/2 the whole square is equal to 13/4. So therefore take square root. So m minus 5/2 is equal to plus or minus under root 13 upon 4. Taking square root both sides. Okay. दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं. Now you should know that root 13/4 is equal to root 13 upon root 4. That is equal to root 13 upon 2. So that value we will write it here, okay. Therefore it will become m minus 5/2 is equal to plus root 13 upon, so that was 4 था तो 2 आएगा. Because then it will become m minus 5/2 is equal to minus root 13/2. Okay. So now take it this side. Okay. Why? Because root 13/4 is root 13/2. So that we will put it here. Okay. Now we will take it this side. So it will become m is equal to root 13/2 plus 5/2. So that is equal to root 13 plus 5 upon 2 m. That side take it as m is equal to minus root 13/2 plus 5/2. So that if 2 is common or LCM, so root 13 plus 5 upon 2. Okay. So ये इसका आंसर है. I hope you got that. Easy है if you know this formula. Okay, this formula अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो. ठीक है. तो otherwise it will be difficult. Okay. I hope you got that. Next problem करेंगे 4th one. Okay, 4th problem, 9y square minus 12y plus 2 is equal to 0. Now यहाँ पे formula will change little bit. Why? Because यहाँ पे number is given. Okay, number is given. Last problem में number नहीं था, यहाँ पे number है, तो फॉर्मूला लिटिल बिट चेंज हो जाएगा. क्या फॉर्मूला है देखो. ठीक है. फर्स्ट एबीसी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू -12, सी इज इक्वल टू 2। सो फार्मूला में स्लाइड चेंज है। क्या फार्मूला है देखो अभी, इफ ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे वाई है तो हम वाई लिखेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन so here a will not come, so what you have to write is y square plus b by a y, b by a यहाँ पे ये आएगा अपॉन b बाय 2a, a आएगा स्क्वायर माइनस b बाय 2a द होल स्क्वायर, देन प्लस c बाय a इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे ए आ गया तो थोड़ा फार्मूला में चेंजेस आ जाएगा, तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे ये बुक में दिया है वैसे, इट इज गिवन हेयर, ओके, यहाँ पे दिया है तो हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका वैल्यू हम पुट करेंगे अभी, ओके। सो इट विल बिकम वाई स्क्वायर, बी का है -12, बी इज -12, ये है 9 एंड प्लस बी है -12 अपॉन 2 इंटू ए है 9 द होल स्क्वायर, माइनस सेम चीज़ फिर से आएगा -12 इंटू 2 इंटू 9 होल स्क्वायर, सी का है 2, सी इज 2, ये है 9, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इतना डिफिकल्ट लग रहा है बट इट इज सिंपल, ओके। हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं 12 अपॉन 2 इंटू 9, तो कैसे कट होगा ये भी, ठीक है। तो ये बनेगा 2 इंटू 6 एंड अगेन 3 में जाएगा तो इट इज 2 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो बनेगा -2/3। तो ये पूरा सिंपल आंसर मिल गया। तो हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। तो दिस पार्ट यू कैन डू इन रफ, ओके, रफ में कर सकते हैं, फिर यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर -12 अपॉन, यहाँ पे वाई है, सॉरी यहाँ पे वाई आएगा 12 अपॉन 9y प्लस -2/3 द होल स्क्वायर माइनस -2/3 द होल स्क्वायर प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0, okay. Now this part take it that side, so y square -12/9y plus -2/3 the whole square is equal to, this will minus है तो it will become plus, this minus will not change, it will be like this, okay, where और ये बनेगा -2/9, okay. Now you know that -2/3 the whole square is equal to 2/3 the whole square, okay, both are same, ये हट जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। So we can remove this, that's all. बोथ आर इक्वल है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इक्वल रहेगा। तो वाई स्क्वायर -12 अपॉन 9y प्लस 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी हम ले सकते हैं, आई मीन ओमिट कर सकते हैं। दिस विल राइट इट देयर, ओके। सो वाई स्क्वायर -12 अपॉन 9y प्लस 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे 2/3 द होल स्क्वायर क्या आएगा, 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, दैट विल राइट इट देयर, ओके। So it will become 4/9 minus 2/9, so that will become 2/9. तो दैट वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर -12 अपॉन 9y प्लस
2/3 the whole square is equal to 2/9. ओके, सो यू गॉट दिस 2/9. तो इसके बाद इसको और इसको लेंगे और यहाँ पे माइनस है तो y माइनस है तो माइनस और 2/3 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9. देन we will write taking square root both sides. Okay, so that's for y minus 2/3 is equal to plus or minus under root 2/9. So taking square root both sides. Okay, तो ये हो गया. उसके बाद इसका रूट लेंगे. √2/9 इज इक्वल टू √2/√9. ये बनेगा √2/3. ओके, सो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सो y minus 2/3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस √2/3. फर्स्ट प्लस लेंगे बाद में माइनस, तो y minus 2/3 इज इक्वल टू प्लस √2/3 और y minus 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3. ना इसका वैल्यू उस साइड लेना है बस. सो y इज इक्वल टू √2/3 प्लस 2/3. 3 कॉमन है, एलसीएम है, सो √2 + 2 डिवाइडेड बाई 3. सो दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन में क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 3/3. सो यहाँ से हम 3 को ज्वाइन कर देंगे तो डिवाइड बाई 3. सो दिस इज द आंसर. ओके, so this is the final answer for fourth one. Now let's see for fifth one. Fifth one का क्या आंसर आता है. ओके, फिफ्थ प्रॉब्लम करेंगे. 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग इट विथ ay² + by + c इज इक्वल टू 0. A is 2, B is 9, C is 10. इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे. राइट, इफ ay² + by + c इज इक्वल टू 0, देन y² + b by ay + b/2a the whole square minus b/2a the whole square plus c/a is equal to 0. तो ये है इसका फार्मूला में फिट करेंगे अभी इसका वैल्यू. सो y², b is 9, a is 2, y प्लस ये है b है 9 इंटू 2, a is 2 the whole square minus b is 9, a is 2 the whole square plus c is 10/2 is equal to 0. ना इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9/2 into 2 the whole square is equal to 9/4 the whole square. So that we will put it here. Okay, so that will become y² plus 9/2 the y plus 9/4 the whole square minus 9/4 the whole square plus 10/2 is equal to 0. Let's take it right hand side. Okay, so y² plus 9/2y plus 9/4 the y² is equal to, that will go minus will become plus 9/4 and it will become minus 10/2. That we will write it there. Okay, that will become y² plus 9/2 y plus 9/4 the y² is equal to 9/4 y² minus 10/2. Okay, now we have to solve this separately. So 9/4 whole square minus 10/2. Okay, so it will become 81/16 minus 10/2. But it is 16, it is 2. Okay, so what is the LCM? LCM has 16.
सो इसको चेंज करेंगे. सो इट विल बिकम 81/16 minus 10 2 into 8. So that will become 81/16 minus 10 into 8 80/2 into 8 16. So that will become 81 minus 80/16. That will become 1/16. Okay. So do this in rough. Okay. That value we put it there. Okay. इसका वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे. So that will become 81/16 minus 10/2. So that is equal to 81/16 minus 10 2 into 8 into 8. So 81/16 minus 80/16. That is equal to 1/16. So y square plus 9/2y plus 9/4 the whole square. Now इसको ग्रुप करेंगे this and this y and plus यहाँ पे प्लस है तो प्लस 9/2 the y square is equal to 1/16. So therefore y plus 9/2 plus or minus under root 1/16. इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट. So taking square root both sides. Now 1/16 is equal to root 1/16. So बनेगा 1/4. ओके. सॉरी यहाँ पे 4 था तो 4 आएगा. 4 मीन्स यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. So that value will put it here. Okay. So what we will get, y plus 9/4 is equal to plus or minus 1/4. तो फर्स्ट प्लस लेते हैं बाद में माइनस. सो y plus 9/4 is equal to plus 1/4 और y plus 9/4 is equal to minus 1/4. So take it that side. So y is equal to 1/4 minus 9/4. That is equal to 1 minus 9, 8/4. So y is equal to minus 8/4. Cut minus, that will become minus 2. Okay. That is equal to minus 2. So y is equal to, you will get minus 2. On that side what we will get, okay, that will become y is equal to minus 1/4 minus 9/4. That is equal to minus 10/4. So y is equal to minus 10/4. Cut it 2 and 5. So y is equal to minus 5/2. Okay. So this is the answer for fifth. Last problem करेंगे अभी. Okay. Sixth problem, 5x square is equal to 4x plus 7. स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. इसको इस साइड लेंगे. 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग इट विद ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 5, c is equal to minus 4, c is equal to minus 7. Okay. So a is equal to 5, b is equal to minus 4, c is equal to minus. अभी फॉर्मूला लिखेंगे. If ax square plus bx plus c is equal to 0, then x square plus b upon ax plus b upon 2a the whole square minus b upon 2a the whole square b upon 2a the whole square plus c upon a is equal to 0. इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी है, सॉरी बी, इट वाज बी, बी इज माइनस 4. So it will become minus 4, a का वैल्यू 5x plus minus 4, 2 into a का वैल्यू 5 the whole square minus
-4/2 इंटू 5 होल स्क्वायर प्लस सी का है -7, ए का है 5 इज इक्वल टू 0। इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। -4/2 इंटू 5 कट हो जाएगा 2 तो बनेगा -2/5 द होल स्क्वायर। माइनस यू कैन रिमूव इट बिकॉज इवन नंबर है तो बनेगा 2/5 द होल स्क्वायर। यू कैन रिमूव दिस माइनस। ओके, तो माइनस निकाल सकते हैं। तो इसको सिम्प्लीफाई होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे फिट करेंगे, 2/5 को यहाँ पे फिट करेंगे। तो x स्क्वायर -4/5x प्लस 2/5 द होल स्क्वायर -2/5 द होल स्क्वायर -7/5 इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड में लेते हैं। तो x स्क्वायर -4/5x प्लस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस था प्लस हो जाएगा 2/5 एंड ये माइनस भी प्लस हो जाएगा 7/5। नाउ वी विल डू राइट दिस दैट साइड। x स्क्वायर -4/5x प्लस 2/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 स्क्वायर plus 7/5. Okay, so that will become 4/25 plus 7/25. So 2 square is 4, 5 square is, अभी इसको sorry that is 5। तो अभी इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 4/25 प्लस 7/5 एलसीएम 25 है दोनों में, तो इसको 25 करेंगे। So that will become 4/25 plus 7, 5 into 5 into 5 बनेगा 4/25 plus 35/25। So that will become 4 plus 39/25. That value will put it there. Okay. So therefore x square -4/5x plus 2/5 the whole square is equal to 39/25। ना इसको ग्रुप करेंगे, बट यहाँ पे माइनस है तो x -2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। therefore x -2/5 is equal to plus or minus √39/25, taking square root both sides। इसके बाद प्लस लेंगे एक बार, प्लस वैल्यू माइनस लेंगे तो बट सो √39/25 बनेगा √39/25 ये बनेगा √39/5। दैट वैल्यू विल पुट इट हियर। ओके, therefore x -2/5 is equal to plus or minus 39√5 प्लस वैल्यू लेंगे x -2/5 is equal to plus √39/5 और x -2/5 is equal to minus √39/5। take it that side, so x is equal to √39/5 plus 2/5। therefore x is equal to ग्रुप कर देंगे √39 plus 2/5। that side also same thing, so x is equal to minus √39/5 minus plus 2/5, so x is equal to minus √39 plus 2/5। तो इतना इजी नहीं है, बट इफ़ यू नो दिस फार्मूला देन सारे इजी हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो मेन ये फार्मूला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। ये फार्मूला है, अगर ये आप याद रखोगे फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ये फार्मूला अगर ये याद हो जाएगा तो बाकी कैलकुलेशन में आप सिली मिस्टेक मत करो, तो इजीली सब हो जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट दिस।
Okay, so if you like the subscribe. Okay.